Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss class 11th physics and chapter name is gravitation. So today's key points are first is derive Kepler's third law from Newton's gravitational law. Second is acceleration due to gravity. Third is a relationship between capital G and small g. So capital G is a universal constant and G is a acceleration due to gravity. And in fourth, now we find distinctions between the G and G. Okay. So these two key points are covered in today's video. So these key points are covered in today's videos. Okay. So these key points will be covered in today's videos. Okay. So very first topic is derive Kepler's third law. Okay. So we know that Kepler's third law, T square is proportional to the R cube. Okay. R is a radius and T is a time period. So this is a Kepler's third law. So and we know that Newton's gravitational law we have already discussed. Force is equal to the G m1 m2 upon R square. This is the universal Newton's gravitational law. So now we derive the Kepler's third law from Newton's gravitational law. Okay. This law we have already discussed in previous lecture. So here Kepler's third law. So let a planet of mass m be revolving around the sun of mass m. Okay. So एक planet है जिसका mass है small m and be revolving around the sun of mass m and वो sun के around revolving कर रहा है and sun का mass है capital M. So अगर हम diagram से इसको समझें then this is the sun and this is the planet. Okay. So mass of the sun is a capital M and the mass of the planet is small m and sun of mass m and circular orbit of radius r with linear velocity v. ओके तो ये प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग कर रहा है रेडियस आर के सर्कुलर ऑर्बिट में एंड लीनियर वेलोसिटी वी से ये मूविंग कर रहा है. सो ये प्लैनेट है, ये इस तरह से इसके चारों तरफ एक रिवॉल्विंग कर रहा है और इसकी रेडियस क्या है आर है एंड ये वी वेलोसिटी से मूविंग कर रहा. ओके सो हियर the force acting on the planet due to sun. okay देन ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी हम ग्रेविटेशनल लॉ में डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कोई डिस्टेंस पे सेपरेट रखे हुए हैं देन उन पे एक फोर्स एक्ट करता है दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू द जी m1 m2 अपॉन r square. R is a distance between two separated bodies and m1 and m2 are the masses of that bodies. okay so here force acting on the planet due to sun. So according to the
Newton's gravitational law. Newton's gravitational law, F is equal to G, and we know that G m1 m2. Here the mass of the first body is m and mass of the second body is small m, and the distance between two bodies is a small r. So force is the force acting on the planet due to sun is F is equal to G m upon r square. Okay, and this is the necessary. This is the necessary centripetal force. Centripetal force to moving in circular orbit. Moving in circular orbit. ओके ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट में मूविंग करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इस फोर्स से मिलता है. सो दिस इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv square upon r, and this centripetal force is equal to the gravitational force. So we write here G m upon r square. So m and m are cancelled, and this r is also cancelled by this r. So we write here v square is equal to G m upon r. Okay, and now here if t is the period of revolution of planet, then orbital speed will be is represented by small v, and v is equal to, we know that 2 pi r upon t. Okay, so from here we put the value of v in equation 1 from equation 2. Okay, so here we write now we put the value of v from equation 2 in equation 1. Put the value of v in equation first. Okay, so here 2 pi r upon t square is equal to g m upon r is the 4 pi square r square upon t square is equal to g. We find the value of t square is equal to 4 pi square r square upon g m. Here these are the constant value. This part of 4 pi square upon gm is a constant part, so we write here t square proportional to the r. Sorry, here we write this r and r square, so here the r cube, so we write here r cube. So this is the 4 pi square upon gm is a constant. So t square, we obtain t square proportional to the r cube. This is a Kepler's third law. This is Kepler's third law. Okay, so this is the only basic equation. So here we derive the Kepler's third law from the Newton's gravitational law. Okay, now we discuss second topic, acceleration due to gravity, means small g. Okay,
So second is acceleration due to gravity. We know that acceleration due to gravity is represented by a small g, and कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई भी जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, देन इनिशियली वो रेस्ट में, और फिर जैसे ही वो गिरना स्टार्ट होती है देन उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये हम ऊपर से थ्रो करते हैं, देन जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन लगता है जिसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड is represented by small g, and the unit of this is acceleration. So unit of gravity, acceleration due to gravity is meter per second. So we write here meter second inverse. Okay, and your dimensional formula is also same as the acceleration. Okay, so LT minus 2, the dimensional formula of acceleration. So we write here m0 LT minus 2 is the dimensional formula of acceleration due to gravity. And third is a relationship between g and g. Here we have already discussed the g is a capital G is a Newton universal constant, and small g is a acceleration due to gravity. यहाँ पे कैपिटल जी क्या था, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ओके, यहाँ पे ये जो फोर्स लगता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कैपिटल जी. बट ये जी क्या है, कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, देन अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity. So here we discuss the relationship between capital G and small g. Let the mass of the earth be capital M and radius is r. ओके, एक अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M एंड उसकी रेडियस है r. कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m on the earth surface. ओके, एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, हमने अर्थ सरफेस पे उस बॉडी को कंसीडर किया, लाइक दैट द अर्थ एंड द सेंटर एंड इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड नाउ हियर कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द अर्थ surface, and here the mass of the earth is a capital M. Now force acting on the body due to earth. Now force acting on the body, this is the body, on the body due to earth will be, we have already known that the force between two bodies equal to the F G M. The mass of the earth is m and the mass of the second body is small m, and the distance between two objects is equal to the radius of the earth. So we write here r square. Okay, this is the equation first. But if g is the acceleration, if g small g is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, then from Newton's second law, by Newton's second law of motion,
So by the Newton's second law of motion, we have already known F is equal to ma, mass into acceleration. So here we write F is equal to mass into acceleration, and acceleration is g. So we write here mg. This is the equation second. Now we compare the equation first and second. Compare the equation first and second. So both are equal. So we write here mg is equal to g m upon r square. So here m and m are cancelled. So we write here only g is equal to g m upon r square. So this is the relation between small g and capital G. Okay. So small g is equal to the capital G universal constant, m the mass of the object, mass of the earth, and r square the radius of the earth. So here conclusion is that the acceleration of gravity depends on the mass of the earth, means capital M, and acceleration due to gravity depends on the radius of the earth, and gravity does not depends on the mass of the object. Okay, तो ये ग्रेविटी एक अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है, बट किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है. ओके, सो ये था इनके बीच में रिलेशन. एंड नाउ वी डिस्कस डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. So is a capital G and side is a small g. Okay. So very first difference is a G is the gravitational constant. Is the gravitational constant. Gravitational constant. Okay. And G is a acceleration produced in our body due to the attraction by earth. G is the acceleration produced in our body due to attraction by earth. Due to attraction by अर्थ. ओके, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी सभी जगह वैल्यू सेम होती है. एंड जी क्या है? एक एक्सीलरेशन है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से. ओके, एंड सेकेंड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ. सेकेंड इज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो फोर्स क्या है? ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होता है जी. ओके, सो ये जी क्या है? उसके जो फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड कैपिटल जी. एंड स्मॉल जी क्या है? जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है देन अर्थ उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की वजह से जो लगता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय small g. Okay, and third क्या है? The unit of capital G is, we have already discussed the unit of capital G, Newton meter square kg minus 2. Okay, and unit of small g we have already know, this is the acceleration. So unit of acceleration is a meter per second. Sorry, meter per second square. So we write ms minus 2. Okay, and next is the value of G. G is same at each place. G क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू सभी प्लेसेस पे सेम होती है. एंड द वैल्यू ऑफ G डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. वैल्यू ऑफ G इज डिफरेंट at different places.
and G is the universal constant. So value of capital G is equal to the 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square, G minus 2. And here the average value of G is considered at 9.8 ms minus 2. And the next is G is a scalar quantity. And here the small g is a vector quantity. Okay, so these are the distinctions between capital G and G means universal constant and acceleration due to gravity. तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है, कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैपलर्स थर्ड लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इन दोनों में रिलेशंस क्या है एंड इनमें डिस्टिंक्शंस क्या है. सो थैंक यू.